Assalamu alaikum, everyone. My name is Dr. Moaviz and I'm a PGT in ENT at Benazir Bhutto Hospital. And I am a mentor for ENT Part 1 examination, which is a collaboration between MedExam Expert and StudyMate. So we have been running FCPS-1 courses for the last couple of years, and many students have passed Part 1 with the help of our courses and from the help of free WhatsApp groups and webinars and guidance sessions. So this is a free webinar on esophagus. So we'll be looking at the embryology, anatomy, physiology, pathology of the esophagus briefly. So what is esophagus? Esophagus is basically the food pipe of the body. It is a part of the foregut. We basically have three parts of the gut: foregut, midgut, and hindgut. So esophagus is part of the foregut, which is from the esophagus to the upper part of the duodenum. इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक नॉर्मल एनाटमी है जो लेफ्ट मोस्ट डायग्राम है. ठीक है, इसमें ट्रेकिया का अपना रास्ता है, एसोफेगस का अपना रास्ता है, लेकिन देयर आर सम डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज which include esophageal atresia, tracheoesophageal fistula, stenosis. So ये तीन कॉमन डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज हैं. अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखें तो ये एक नॉर्मल एनाटमी है. ठीक है, air has its own pathway, whereas the food has its own pathway. Then there is the pure esophageal atresia or stenosis. You can see that trachea is normal, whereas in the upper part of esophagus, you can see there is a narrowing, which is known as the esophageal atresia or the esophageal stenosis. In the third diagram, you can see there is a pure tracheoesophageal fistula, which is also known as the H type of anomaly. In this, there is a communication between the trachea and the esophagus. You can see that trachea और esophagus यहाँ पे आपस में मिल रहे हैं. There is a fistula. And in the fourth picture, जिसमें आप circle में देख रहे हैं, this is the most common type of developmental anomaly, which is esophageal atresia with tracheoesophageal fistula. There is esophageal atresia in the proximal part, whereas the distal part is connected with the trachea via fistula. So this is the most common type of developmental anomaly, which is esophageal atresia with tracheoesophageal fistula. So CPSP के लिए आपको important चीज याद रखनी है कि CPSP हमेशा most common anatomy, embryology और pathology test करते हैं. तो अगर कोई question है कि which is the most common anomaly, so it is the esophageal atresia with distal tracheoesophageal fistula. So next we'll be looking at the applied anatomy. Esophagus is a fibromuscular tube with a total length of 25 centimeter. It starts from the lower end of the pharynx at the level of C6 vertebra and it ends at the stomach at the level of T11 vertebra. Total length esophagus की 25 centimeter होते हैं और lower end of pharynx से start होते हैं और stomach तक जाके end हो जाते हैं. It starts at C6 and ends at T11.
Okay, this is a very important slide, and especially from the CPSP point of view, you'll always get 1 to 2 MCQs from this slide. So there are 3 constrictions in the esophagus. Normally they are at the level of C6, T4 and T10. इन constrictions की जो location है ये important है because during esophagoscopy, whenever the foreign bodies or food bolus stuck in the esophagus, you have to be very careful during esophagoscopies. So the most common site of obstruction of food bolus or the foreign bodies at the level of C6, which is the narrowest part of the esophagus. C6 पे there is a pharyngoesophageal junction. यहाँ से esophagus start हो रहा होता है. It is at the level of approximately 15 centimeter from the upper incisors. जब भी हम एसोफेगोस्कोप इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसकी लेंथ मेजर करते हैं अपर फ्रंट वाले 2 टीथ से. तो 15 सेंटीमीटर पे एक नैरोइंग होती है, जो फर्स्ट नैरोइंग होती है at the level of C6. Then the second narrowing is at the level of T4, where you can see that the arch of aorta is crossing the esophagus. And also close to this, the left main bronchus is crossing the esophagus. So this is approximately at the level of 25 centimeter. And third constriction is where the esophagus crosses the diaphragm, which is approximately at the level of T10, which is 40 centimeter from the upper incisors. Up there is some confusion for some students के कुछ लोग कहते हैं कि 5 constrictions हैं, कुछ कहते हैं 3 constrictions होती हैं. तो basically constrictions 3 ही होती हैं, लेकिन arch of aorta T4 के लेवल पे होती है, उसके साथ ही नीचे लेफ्ट मेन ब्रोंकस क्रॉस करता है T5 के लेवल पे. इसी तरह T10 के लेवल पे एसोफेगस क्रॉस करता है डायफ्राम को, और T11 के लेवल पे ये स्टमक में एंटर होता है. तो ये बहुत क्लोज होती हैं, इसलिए आप इसको इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि आर्च ऑफ एओर्टा है या मेन ब्रोंकस है. So we will be, for the CPSP exam point of view, we will be considering there are only 3 constrictions. First is at the level of C6, second is at the level of T4, and third is at the level of T10. First constriction, which is the narrowest part of esophagus, it at 15 centimeter from upper incisors. Second constriction is at 25 centimeter from upper incisors. And third is at 40 centimeter from the upper incisors. इसका एक mnemonic है कि C6 plus T4 is equal to T10. और अगर आप इंसाइजर से मेजर करना शुरू करें तो 15 सेंटीमीटर पहली कंस्ट्रक्शन है, 25 सेंटीमीटर पे सेकंड कंस्ट्रक्शन है, और 40 सेंटीमीटर पे थर्ड कंस्ट्रक्शन है. तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि एसोफेगस की लेंथ कितनी है, तब आपका क्या आंसर होगा? Those who are with us on the Zoom can type in the Zoom chat box, and others who are with us live on Facebook can enter in the Facebook comment. कितनी लेंथ है एसोफेगस की? Okay, I can see some correct answers. एसोफेगस की लेंथ 25 सेंटीमीटर है. ठीक है, एसोफेगस की लेंथ 40 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन अगर अपर इंसाइजर से लेंथ मेजर करें, डिस्टेंस मेजर करें, वो 40 सेंटीमीटर है. लेकिन एसोफेगस स्टार्ट होता है 15 सेंटीमीटर के लेवल से. Okay, so for the next, for the wall of the esophagus,
एसोफेगस की बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं. अगर इनसाइड से आउटसाइड आए तो फर्स्ट लेयर इज द म्यूकोजा, सेकंड लेयर इज द सब म्यूकोजा, third layer is the muscular layer, and fourth, which is a tough layer, it is the fibrous layer. Mucosa is lined by stratified squamous epithelium. Submucosa connects the mucosa to the muscular layer. And muscular layer, as you can see in this diagram, has 2 parts. The inner layer is the circular layer, whereas the outer layer is the longitudinal layer. And the fourth layer is the fibrous layer, which forms loose covering of the esophagus. अगर हम मस्कुलर लेयर को डिटेल में देखें, it has 2 parts, inner circular and outer longitudinal. जो circular fibers होते हैं at the lower end, they thicken to form a cardiac sphincter. ठीक है, this cardiac sphincter prevents the reflux of the acidic contents of the stomach into the esophagus. Upper जो esophageal sphincter होता है, this is the narrowest point of the esophagus. It is also known as the cricopharyngeus. Whereas the lower esophageal sphincter is known as the cardiac sphincter. अगर हम muscular fibers की बात करें तो we divide esophagus into 3 parts: upper 1/3, middle 1/3, and the lower 1/3. Upper 1/3 contains the striated muscles. Lower 1/3 contains the smooth muscle, whereas the middle 1/3 contains a mix of smooth and the striated muscles. So this is a slide showing the histology. For histology, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, that mucosa of the esophagus is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium. अगर आप इस डायग्राम में देखें, you can see stratified squamous epithelia. There are stacks of cells on top of each other. और इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको कोई केराटिन लेयर नजर नहीं आ रही. So normal esophagus is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium. Then for the nerve supply of esophagus की भी nerve supply parasympathetic fibers होते हैं और sympathetic fibers होते हैं. Parasympathetic fiber esophagus के आते हैं vagus nerve से, which is the 10th cranial nerve, where the sympathetic fibers are derived from the sympathetic trunk. For the lymphatic drainage, arterial supply and the venous drainage of the esophagus, हम esophagus को 3 parts में divide करेंगे: upper 1/3, middle 1/3, and the lower 1/3. जो upper cervical esophagus होते हैं, उसकी lymphatic drainage होती है deep cervical lymph node से. जो middle वाला होता है, thoracic part होता है, उसकी lymphatic drainage होती है posterior mediastinal lymph nodes में. और जो abdominal part होता है esophagus का, उसकी lymphatic drainage होती है stomach के पास gastric, यहाँ पर celiac lymph nodes में. The cervical part की drainage होती है deep cervical lymph nodes में, thoracic part की posterior mediastinal lymph nodes में, और abdominal part की होती है near the stomach into the gastric or the celiac lymph nodes. Similarly, arterial supply में upper 1/3 is supplied by the inferior thyroid artery. There are esophageal branches of the inferior thyroid artery. Esophagus thyroid के करीब होता है lower part के.
तो वहीं से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो अपर 1/3 को सप्लाई करती हैं। मिडिल 1/3 जो thoracic पार्ट होता है, इट इज सप्लाइड बाय द esophageal branches from the thoracic aorta, और lower 1/3 is supplied by the left gastric artery। ठीक है, ये जो स्टमक का लेसर कर्वेचर होता है वहां से esophageal branches होती हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की। वेनस ड्रेनेज बहुत आसान है एसोफेगस की, अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। अपर 1/3 सप्लाई हो रहा था इंफीरियर थायराइड आर्टरी से, अपर 1/3 ड्रेन हो रहा था इंफीरियर थायराइड वेन। लोअर 1/3 सप्लाई हो रहा था लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से, लोअर 1/3 ड्रेन होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में, और मिडल 1/3 ड्रेन हो रहा होता है एजाइगस वेन में। अगर आप यहाँ पे एक स्टार देखें, so this star is very important. It is showing the portosystemic anastomosis. In the portosystemic anastomosis, okay, sorry for interruption, in the portosystemic anastomosis, ठीक है, पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस वो पार्ट होता है जहाँ पे पोर्टल वीनस सिस्टम मिक्स एनास्टोमोज और होते हैं सिस्टेमिक वीनस सिस्टम से। ठीक है, पोर्टल वीनस सिस्टम के पार्ट होते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, और सिस्टेमिक वीनस सिस्टम का पार्ट होता है एजाइगस वेन। इन दोनों की यहाँ पे आपस में कम्युनिकेशन होती है, और जब भी अगर पोर्टल हाइपरटेंशन होगा तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन यहाँ पे डायलेशन होते हैं और एसोफेजियल वेरिसेस मिलते हैं यहाँ पे। So coming over to the pathology of esophagus, first syndrome which is important to the esophagus is the Plummer-Vinson syndrome. Plummer-Vinson syndrome is a triad of dysphagia, iron deficiency anemia, and esophageal webs. So a patient presents to you with complaint of difficulty in swallowing, ठीक है, और पेशेंट को ज्यादा होती है डिफिकल्टी इन swallowing solids। जो भी पेशेंट swallow नहीं कर पा रहा होता उसको विद टाइम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लग जाती हैं, which also include the iron deficiencies। और जब आप उसका ब्लड सीपी करवाते हैं उसमें आपको एनीमिया मिलेगा। ठीक है, एनीमिया की अगर आप टाइप देखेंगे तो वो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक टाइप ऑफ एनीमिया होगा। सेल्स के जो साइज होता है वो कम होते हैं, और सेल्स के कंटेंट भी कम होते हैं। और जब इन पेशेंट्स का आप टंग एग्जामिनेशन करें, इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग व्हिच इज नोन एज गुल्लासाइटिस, and in these patients there is an increased risk of esophageal squamous cell carcinoma. This is a mnemonic Plummer's die
Okay, so plumbers is for the Plummer-Vinson syndrome, and DIE is for the triad of dysphagia, iron deficiency anemia, and esophageal webs. So next pathology is achalasia. Achalasia is due to failure of the lower esophageal sphincter to relax, which is due to the loss of mesenteric, which is also known as the orbex plexus, due to loss of the postganglionic inhibitory neurons, which contain vasoactive inhibitory peptide and nitric oxide. So this is a progressive dysphagia for solids and for liquids. Okay, but in patients with cancers or with mass in esophagus, there is obstruction only to the solids. But in achalasia, there is dysphagia for both solids and liquids. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक बर्ड बीक है, ठीक है, और इस बेरियम swallow के एक्सरे पे देखें तो ये there is a bird beak sign. बेसिकली यहाँ पे जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ये रिलैक्स नहीं हो रहा होता, ठीक है. जब स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होता तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फूड एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और उसकी वजह से लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस डायलेट हो जाते हैं, ठीक है. और बाद में ये अगर आप बेरियम swallow करवाते हैं तो ये कुछ इस तरह की लुक आती है. तो दिस इज सिमिलर टू दिस बर्ड बीक. This is also associated with an increased risk of esophageal cancer. So quickly revising, what is achalasia? Achalasia is failure of lower esophageal sphincter to relax. इसमें डिस्फेजिया किस किस्म का होता है? इसमें डिस्फेजिया सॉलिड्स को और लिक्विड्स दोनों को होता है. और इसके लिए टेस्ट कौन सा करवाएंगे? इसमें टेस्ट करवाएंगे बेरियम swallow. बेरियम swallow पे क्या नजर आएगा? बेरियम swallow पे बर्ड्स बीक अपीयरेंस नजर आएगी, ठीक है. और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए so there is an increased risk of developing esophageal cancer. Next we have the Barrett's esophagus. So Barrett's esophagus is a specialized intestinal metaplasia. तो मेटाप्लेजिया क्या होता है? मेटाप्लेजिया is basically a change in form, ठीक है. एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप एक डिफरेंट किस्म के डिफरेंशिएटेड सेल टाइप में चेंज हो जाते हैं, ठीक है. मेटाप्लेजिया कैंसर नहीं होता क्योंकि ये दोनों जो सेल टाइप्स होते हैं ये डिफरेंशिएटेड सेल टाइप्स होते हैं, ठीक है. तो नॉर्मली एसोफेगस की जो लाइनिंग होती है वो किस टाइप की होती है? कैन समबडी क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स? Yes, normally the esophagus is lined by non-keratinized stratified squamous type of epithelium, ठीक है. किसी भी वजह से जब बार बार स्टमक से एसिडिक कंटेंट्स ऊपर आएंगे, रिपीटेडली एसोफेजियल म्यूकोजा को ट्रॉमा होगा तो ये लाइनिंग चेंज होने लग जाती है और ये कन्वर्ट हो जाती है टू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम which is non-ciliated columnar with goblet cells, ठीक है. नॉर्मली एसोफेगस की लाइनिंग होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, लेकिन जब रिकरेंट गर्ड हो, बार बार रिफ्लक्स हो, एसिडिक रिफ्लक्स, इसको रिकरेंट ट्रॉमा होगा तो ये कन्वर्ट हो जाती है लाइनिंग इनटू नॉन सिलिएटेड columnar epithelium with goblet cells.
And this is associated with an increased risk of esophageal adenocarcinoma. Because there are columnar cells with goblet cells, so they lead to an increased risk of adenocarcinoma. So this is a slide, last slide, which is covering the esophageal cancers. Esophageal cancers typically present with a progressive dysphagia. कोई भी mass होगा, first it causes obstruction to the solids. With time जब वो mass बड़ा हो जाएगा size में तो वो liquids को भी obstruct करने लग जाएगा. और जब भी dysphagia होगा उसकी वजह से weight loss होगा. These patients have a very poor prognosis due to an advanced disease at the presentation. So this is a table taken from the first aid, which is showing that two major types of esophageal cancers. Number one is the squamous cell carcinoma, and number two is the adenocarcinoma. Squamous cell carcinoma commonly involves the upper 2/3 of the esophagus. Adenocarcinoma commonly involves the lower 1/3 of the esophagus. अगर आप इसमें आप कॉमन चीजें देखें तो जो स्मोकिंग और एक्लेजिया इट कैन कॉज एनी टाइप ऑफ कार्सिनोमा, बट कॉमनली इनसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास ही होते हैं. Whereas alcohol, hot liquids, caustic and strictures, they lead to the squamous cell carcinoma. Because whenever alcohol and hot liquids are taken, तो इनका जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है, जो पहला ये ट्रॉमेटाइज करते हैं म्यूकोजा को, वो अपर 2/3 ऑफ द एसोफेगस को करते हैं. इसीलिए इनकी वजह से जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी बनते हैं वो अपर 2/3 में बनते हैं. Whereas chronic GERD और Barrett esophagus, इनकी वजह से जो रिपीटेड ट्रॉमा हो रहा होता है, जो स्टमक से एसिडिक कंटेंट्स ऊपर आ रहे होते हैं, वो इनिशियली ट्रॉमेटाइज करते हैं लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस को. इसी वजह से ये लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस का एडिनोकार्सिनोमा को कॉज बनते हैं. So we have covered embryology, anatomy, physiology, histology, and pathology of esophagus. So if you have any comments, any suggestions regarding this session, please type in the chat box. I'll be happy to answer. And specifically, if you have any questions related to part 1 exam of ENT. Okay, so there is a question कि डिंगरा हमने पूरी करनी है या selective topics करनी है. So we have repeatedly shared in our part 1 ENT examination guideline, जो एक PDF है, various groups में share हुआ है. जिसको भी चाहिए होगा वो यहीं पे comment कर दे, हम उनको भी भेज देंगे. कि डिंगरा के आपने सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस करने हैं, जो चैप्टर्स हैं वो करने हैं. ये एग्जाम क्लिनिकल एग्जाम नहीं होता, इसलिए ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं में से एग्जाम बनते हैं. और पेपर 2 मेजॉरिटी ईएनटी रिलेटेड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी टेस्ट होगी. तो जो डिंगरा के गिने चुने चैप्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट है, आपने सिर्फ वही करने, सारा क्लिनिकल टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं. So does anyone have any other question? Okay, so this brings us to the end of our today's session. Thank you very much.